हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता चैनल। हमारा जीएसटी का टॉपिक चल रहा है कंटिन्यू, जिसमें मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया है। देन नेक्स्ट हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। इस वीडियो में हम टैक्सेस अंडर जीएसटी डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं। रजिस्ट्रेशन, सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड रिटर्न। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि किस टाइप से ये क्या है। ओके, तो शुरू करें। ओके, वेलकम। तो हम इन सब टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, टैक्सेस अंडर द जीएसटी। Different types of taxes are levied under the goods and services tax for supply of goods or services or both। तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है? सप्लाई। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी एक्ट 2017। एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी एक्ट 2017 of respective states. UTGST Union Territory Goods and Service Tax, UTGST Act 2017. IGST Integrated Goods and Service Tax, IGST Act 2017। फॉर एग्जाम्पल गिवन है कि अगर जीएसटी की रेट 5% है, देन 2.5% सीजीएसटी हो जाएगा एंड बैलेंस 2.5% एसजीएसटी हो जाएगा विद इन अ स्टेट। वन स्टेट टू अनदर स्टेट आईजीएसटी चार्ज होगा, और इंपोर्ट के केस में आईजीएसटी चार्ज होगी। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ओके, अपार्ट फ्रॉम द अबाउट 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस, कॉम्पनसेशन सेस इज फेवर ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज पे कुछ कॉम्पनसेशन सेस भी है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सीजीएसटी के लिए थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं। क्या है सीजीएसटी? मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज लेवी ऑन और इंट्रा स्टेट, मीन्स विद इन स्टेट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सीजीएसटी इज लेवी एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9। CGST is levied as per provision of Section 9 CGST Act 2017. It is a central tax, and CGST amount collected from taxpayers is a tax revenue for the central government. However, CGST is not levied on the following items: alcoholic liquor for human consumption, petroleum crude oil, high-speed diesel, motor spirit means petrol, natural gases, and aviation turbine fuel. Rate of CGST has been notified by the government on the recommendation of the GST Council। इसके बारे में हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। GST Council के रिकमेंडेड करने पर गवर्नमेंट को एप्लीकेबल कर देते हैं, and such rate and half of the GST rate is mentioned below. Then for example, ये examples हैं। Then next है SGST, State Goods and Service Tax। State goods and service tax is levied on an intra-state, within a state। तो within a state क्या क्या चार्ज हो गया? CGST and SGST। Supply of goods or services or both। SGST is levied as per the provision of respective state GST Act 2017। SGST rate is same to that of CGST rate। Okay, 5% हुआ तो 2.5% या 2.5% सेम हो गया। It is a state tax। CGST क्या है? State tax, and SGST amount paid by taxpayer is the tax revenue of the respective state government, and SGST is applicable 29 states and 2 union territory, Delhi and Pondicherry, who have state legislature। ठीक है, ध्यान रखना 29 स्टेट से 2 यूनियन टेरिटरी है, तो इनमें यूटीजीएसटी में दिल्ली एंड पौंडीचेरी आ जाता है। यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स is levied on all intra-union territory within a union territory। within the union territory में UTGST चार्ज होता है, means Delhi and Pondicherry।
supply of goods or services or both. UTGS is levied as per the provision of UTGS Act 2017 and applicable to all 5 union territories except the Delhi and Pondicherry को accept किया है. 5 union territory Andaman and Nicobar, Lakshadweep, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Chandigarh. UTGST rate same as GST rate. Okay. Then now IGST, Integrated Goods and Services. Integrated Goods and Services levy on all interstate between the states, supply of goods or services or both. IGST is levied as per the provision of IGST 2017 and all import are also subject to the IGST. IGST amount paid by taxpayer as appropriate between the central and respective state government where supply is made. However, IGST is collected by the central government for easy administration and later on central government transfer to the state share to respective states. Applicable GST rate is the IGST rate and the taxpayer do not split IGST into CGST and SGST while paying. ओके सिंपल हम IGST पे करेंगे आगे जो भी प्रोसेस होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पर कर लेते हैं. देन ये हमारा समझ में आ गया. देन कंपनसेशन सेस क्या होता है. ये छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है. हर जगह ये टॉपिक नहीं बताया जाता है. देन ये पूरी एक PDF फाइल है 17 पेजेस है. अगर आपको इसे अच्छा लग रहा है तो आप अपना मेल ID दे दीजिएगा. देन मैं आपको ये PDF फाइल सेंड ईमेल कर दूँगी. ओके तो स्टार्ट करते हैं. कॉम्पनसेशन सेस. Compensation cess is levied on intra-state supply of goods and services both. Intra-state मतलब within a state. As per the recommendation of the GST Council, GST Council के recommended होने पर ही ये applicable होता है. Basic objective of levy of compensation cess is to provide compensation to states for a period of 5 years, only for 5 years, with effect from 1st July 2017 for the loss of revenue arising out of implementation of GST. Is that clear? However, compensation cess is not applicable for taxpayer who opt for composition levy scheme. Compensation cess is levied either at an equivalent rate of GST or a fixed amount per quantity. Usually, goods like palm masala, cigarettes, etc., and luxury goods like car, etc., and environment pollution goods like cola attract the compensation cess, which is over and above the applicable GST. So, compensation cess is levied on intra-state supply of goods and services or goods as per recommendation of the GST Council. ठीक है. अब इन आइटम्स पे compensation cess, पान मसाला, cigarettes, tobacco, this complete. ठीक है. अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आते हैं. रजिस्ट्रेशन. Registration is required for every supplier for each state or union territory when the following conditions are fulfilled. First, the supplier is making taxable supply of goods or services or goods. Aggregate turnover in a financial year exceeds rupees 20 lakh. Then must be registration. Otherwise, up to 20 lakh है तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. एक्सेस द 20 लाख तो रजिस्ट्रेशन के क्राइटेरिया में आप आ जाएंगे. एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सेस 20 lakh. The limit of rupees 20 lakh is rupees 10 lakh for the special category of state के लिए 10 lakh किया गया. स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट कौन से हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे. आगे गिवन है. ठीक है. तो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट को 10 lakh, otherwise generally 20 lakh. Registered person under the pre-GST law, persons who were registered earlier Central Excise Service Tax VAT, GST, anti-tax had to migrate into GST. सब लोगों ने अपना कन्वर्ट करवा लिया GST. Duty and cess subsumed into GST. However, person dealing with alcohol for human consumption and the 5 petroleum products like petrol,
petroleum, crude oil, diesel, petrol, aviation, turbine fuel, and natural gas are still continue as per the pre-GST law and have not migrated into GST if they are exclusive dealing non-GST goods even in GST region. मतलब इस GST applicable नहीं है. A person who is supposed to be registered under the GST includes individual, Hindu undivided family, a company, a firm, a limited liability partnership, association of persons, body of individual, whether incorporated or not in India or outside India, any corporation established under any central act, state act, provided act, exclusive, cooperative society, body corporate, local authority, central government, state government, trust, सोसाइटी एवरी आर्टिफिशियल जुरिगल पर्सन. ठीक है, तो ये सब कौन सी कैटेगरी में है ये हमने बात किया है. सेकंड, a person is supposed to be registered under the GST. Fine. Next है registration is compulsory for the following type of person as per the GST law. और important points हम डिस्कस कर रहे हैं. अब एक कुछ ऐसे हैं कि रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी फॉर द फॉलोइंग पर्सन. कौन कौन से पर्सन को रजिस्ट्रेशन करवाना है, उनको टर्नओवर नहीं देखना है, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना है. जैसे अगर वो ये नहीं बोल सकते कि हमारा तो टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस ही नहीं कर रहा, अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो दे हैव टू रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी. Person making any interstate taxable supply except supplier services. सर्विसेज को छोड़कर अगर आप वन स्टेट टू अनदर स्टेट इंटर टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो यू हैव टू रजिस्ट्रेशन. तो हमें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. आप चाहे आप टर्न लिमिट में एग्जिस्ट करते हो या नहीं करते हो. whose turnover is less than 20 lakh हो, it doesn't matter. For all territory excluding the state of Jammu and Kashmir for which limit is standard. जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ देंगे, बाकी अगर आप वन स्टेट टू अनदर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो एक्सेप्ट द सप्लाई ऑफ सर्विसेज. ध्यान से सुनना क्या वर्ड यूज होगा. ठीक है. नेक्स्ट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग द टैक्सेबल सप्लाई, जो कैजुअली जो अपना बिजनेस ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे दिवाली के टाइम पे क्रैकर्स का, संक्रांत के टाइम पे पतंगों का, तो होली के टाइम पे कलर्स का. तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग द टैक्सेबल सप्लाई, तो उन्हें भी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है. एंड जो वन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं एक्सेप्ट द सर्विसेज, उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो भी आते हैं पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज, उन्हें भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है. Specific services which are intra-state supply and for which electronic commerce operator, उन्हें भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, टर्नओवर डजंट मैटर. Non-resident taxable person making taxable supply, person who are required to TDS tax deduct accruals whether or not separately registered under this act, person who makes taxable supply of goods or services on both behalf of the taxable person एज ए एजेंट के थ्रू अगर आप काम करते हो तो भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जो टीसीएस कलेक्ट करते हैं, उन्हें भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, एवरी पर्सन सप्लाई ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस, इन सबको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. ठीक है. तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करी कि रजिस्ट्रेशन के लिए इनको टर्नओवर लिमिट नहीं देखा जाएगा. ये इन कैटेगरी में आते हैं तो इन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है. एंड द फॉलोइंग पर्सन आर नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन. दो पर्सन रजिस्ट्रेशन में जरूरत नहीं है. Any person engaged exclusively in the business of supplying goods or services or both, they are not liable to tax or wholly exempt from tax. समझ में है? Any person engaged exclusively in the business of supplying goods or services or both that are not liable to tax wholly exempt from tax. वो exempt है, जीएसटी कैटेगरी में आते ही नहीं, जीएसटी में वो एक्सक्लूड है, तो उनको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं, तो उनको जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है, वो एग्जाम्प्ट है. पहली चीज.
दूसरी चीज, एनी एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में हम थ्रेश होल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन लिमिट पर डिस्कस करेंगे। ओके, एंड बी इन टच फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। बाय।